Dear students, there was one famous question in projectile. If the two projectiles are simultaneously viewed from each other, then what will be the nature of the path, nature of the trajectory? It's a beautiful question which I am going to discuss here with you. Uh, I'll sketch the problem as a figure. See, there are, this is O x and O y, the two axes. Okay, now we have two projectiles. One projectile is this. Let me erase it first. We'll make it with some other one, like let me first complete it first. Okay, now we have two projectiles. One projectile is this, and the second projectile is this. This is projectile, I should say, this is projectile 1 and this is projectile 2. And the observer is not you, not a stationary observer, means the observer is not in a stationary frame. The observer is in a frame of projectile. The observer is in frame of projectile. Suppose one observer is here, one observer is here, right? And second observer is, I should say, here, right? Now, this is the position A of the observer, and this is position B of the second observer. Now, it is having coordinate x1, y1, means this is x1 and this is y1. And the second observer is having coordinates x2, y2. This is y2 and this is x2. Okay. Now, dear students, what do? We join AB and we draw perpendicular. Say this is AC is perpendicular. Perfect. Now, what is BC? BC is y2. BC is y2, and say this is CD and this is AE. CD is y2, BC is y2. CD is nothing but equal to y1. CD is equal to y1. CD is equal to AE. Very simple. CD is equal to AE, that is equal to y1. Perfect. ED is equal to AC. Now, what is OD? Well, ED equal to AC and ED is equal to what? OD minus OE. What is OD? That is x2. What is OE? That is x1.
Perfect. Perfect it is. Now, what is BC? That is y2 minus y1. BC is what? y2 minus y1, because BC is nothing but BD. BC is nothing but BD minus BD minus CD. CD is equal to what? y1. So BD is y2, CD is y1. AC is what? X. ED equal to AC, that is equal to x2 minus x1. Now I will take this triangle like this. This is AC, this is AB, this is an angle theta, this is y2 minus y1, this is x2 minus x1. Interesting. What do you find? आप देखेंगे कि tangent theta is nothing but perpendicular BC upon AC. Tangent theta is called slope M. BC is what? y2 minus y1. AC is what? x2 minus x1. So y2 minus y1, that is y, x2 minus x1, that is x. So y is equal to mx. This is an equation of y equal to mx, an equation of straight line. So when you observe the two projectiles from each other, their path will be a straight line. I'm going to revise it once again. See, we have got x or y plane, perfect, and we have projected two projectiles, one that is the yellow one, and projected second is white one is 2. A, x1, y1 is the coordinate. B, x2, y2 are the coordinates. Observer is observing say from A to B, means एक observer बैठा है 2 में, एक बैठा है 1 में, 2 वाला 1 को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2. सिंपल. अब देखिए BD is nothing but, क्या है BD? That is y2. CD किसके इक्वल है? CD किसके इक्वल है भैया? CD इक्वल है AE के, और ये AE किसके इक्वल है? y1 के. तो अगर हम BC निकालें तो ये बना y2 माइनस y1. सिंपल. और अगर हम CD निकालें तो ये CD किसके इक्वल है? दैट इज AE, दैट इज y1. ED किसके इक्वल है? दैट इज AC. तो ED इज इक्वल टू AC OD माइनस OE. देखो ना, OD इज x2, OE इज x1. तो ये बन गया ED किसके इक्वल बन गया? x2 माइनस x1. अब अपन लेते हैं ट्रायंगल. हमने कौन सी ट्रायंगल ली? हमने ट्रायंगल ली ACB या ABC. इसमें ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा. तो व्हाट इज टेंजेंट थीटा? दैट इज परपेंडिकुलर
upon base. Base is AC, perpendicular is BC. Okay, BC, perpendicular. BC is tan theta is slope M. BC is y2 minus y1. AC is x2 minus x1. y2 minus y1 is y. y2, अरे भाई y2 में से y1 निकाला से y, x2 में से x1 निकाला तो x. M is equal to y upon x. This is called equation of straight line. So students, when two projectiles are viewed from each other, they will always follow in such a way that if you view one projectile from the other, straight line. यदि दो प्रोजेक्टाइल हम साइमल्टेनियसली फायर करते हैं, जैसे यहां हमने किए साइमल्टेनियसली फायर, एक व्हाइट वाला एक येलो वाला, तो एक ऑब्जर्वर बैठा है किसमें, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल में बैठा है और दूसरे ऑब्जर्वर कहां बैठा है, दूसरे प्रोजेक्टाइल में. वो एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं भाई सर ने तो बोला था इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा. लेकिन सर हम तो एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. तो जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल से लैंड किए, मेरे को मिले, मैंने कहा बेटा ये है रीजन कि आप एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा. 12 मिनट का लेक्चर है. विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल कभी नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा करवाता हूं. एक कोशिश होती है आपको बेस्ट देने की. सो थैंक यू. और भी कोई टॉपिक हो तो आप मुझे भेज सकते हो. ये किसी बच्चे ने मुझे पूछा था तो मैंने ये प्रूव कर दिया. सो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल 9th 10th 11th एंड 12th फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री टिल 10th और +2 में और +1 में फिजिक्स एंड मैथ्स को कवर करता है. थैंक यू.